I come in? Yes. Good afternoon, sir and ma'am. Good afternoon. Okay. Okay, Ayush. So, just to start with, tell me about yourself. My name is Ayush Khandelwal. I am recently qualified CMA with All India rank 46. Okay. I have completed my graduation from Commerce College Jaipur. As far as my articleship is concerned, I have completed my articleship from Angol and Company, where I learned about e-filing return of income tax, GST return and registration, voucher and verification, and data management and expert management. If we talk about my family, we have 4 members, and I like to do in free time playing and watching the cricket. That's all for myself. Okay, good, Ayush. So, coming to your training experience, first thing which I can see is e-filing income tax returns, right? So, can you tell me the name of forms which you will use for filing income tax return? Forms? Like, few forms are there, na? They have been named. Suppose an individual is having income of rupees 20 lakh from salary head. Which return he will file? ITR 1. Are you sure? Yes. Or if anyone wants to file return under section 44AD, then which return will be used? ITR 4. So these are named as Sahaj, Sugam, and all those names, right? ITR 1 Sahaj, ITR 4 Sugam. Yeah. So that's what I was asking. So what is the need for bank reconciliation? Why do we do that? We need to match over entries with bank transactions. So we used to do bank reconciliation. Just for matching entries. Matching and error to find error in over entries. What can happen if you don't match these? What are the possible consequences? If some entry are not recorded and amount mismatch, date difference between transactions. And there are many chances of misappropriation, right? Correct. So what is the difference between NEFT, RTGS, IMPS? NEFT is National Electronic Fund Transfer, in which payment can be transferred to other party by using net banking through 2 or 3 hours. In RTGS RTGS stands for real-time gross settlement. It takes some time to complete the transaction, and IMPS is immediate fund transfer, just 2-3 minutes. So what is the amount differences in all these things? Amount difference. Amount related difference. There should be some differentiation, no? Why government will create 3 different methods? There must be some differentiation. What is it? I think if we are a new beneficiary, then only up to 50,000 payment can be done. Are you sure? If I want to transfer 1,000 rupees, can I transfer it through RTGS? No. Why? There is certain limit, but I don't remember the limit. Okay, then why you said no for 1,000? Because I know there is some limit, but I don't know the amount. So you mean to say that RTGS can be used for larger amounts, right? Yes. And what about NEFT and IMPS? NEFT, any amount will transfer 1 rupees to larger. Okay. So what do you say? So, Ayush, how we generate e-way bill if we want to generate? There is a portal for generation e-way What is the portal name? bill. e-way bill.in. Are you sure?
No. You have done e-waybill and you don't know the portal name. I think e-filing. EWaybill.com है. What is the validity of e-waybill? Validity. Uh, 2 days. I think. I am not sure about that. For if I want to carry my goods from Kashmir to Kanyakumari, so it will be valid for only 2 days. I need to reach in 2 days only. No, there is an option for day selected. There is option. So there is no validity issue. We can make it for any days. I think within 7 days. Okay. So suppose if our truck met with an accident, what are the consequences in that case with e-waybill? Can you please repeat this? A truck is going from Kashmir to the Kanyakumari. In between Maharashtra, it met with an accident. And what the transporter will do in that? Okay, Ayush, tell us about some short-term goals, about your short-term goals. In next 2-3 years, I want. In next 2-3 years, I want to work at a responsible position with learning more skills and ability, more skills and knowledge, and become and encourage and help my junior to give their best for the company. So Ayush, first thing is, I'm giving you 3 words, limit of 3 words, and you have to define yourself in 3 adjectives. What adjectives you will use for yourself? Just 3. Trustworthy, Okay. honest, responsible. So, how long you think you will be associated with our organization? I associate with our organization until our company will satisfy with my work and my efforts for the company is in good result as for I learned some skills at good position. Okay. So, are you okay? What do you understand with the word change management? Change management. And are you very comfortable with this? Can you please explain about it? Okay. So I'm asking you change management. If there are changes, then how do you manage it? And this is very important in our organization because you also know that because economy is in a deteriorating stage, right? There are so many ups and downs happening. The effects are coming to our company also. We need employees who are dynamic, who can change themselves very easily. So have you ever done that? And if you have done that, can you explain or give us any example where you have showed your change management skills? Not such type of experience in had. Okay. So tell me any experience where you have showed leadership.
I will be a volunteer in a blood donation camp which is organized in my school. I motivate my family members and friends to give blood in the donation camp. So if see, let's suppose I have never donated blood, right? You have to convince me for blood donation. How will you do that? I tell about the benefits of giving blood. Okay, what are those benefits? That's what I'm asking. Okay, Ayush, leave it. Tell me three very nice things which you have learned from your training experience, plus any two things which you want to change in your previous organization or any shortcomings which you observed in your previous organization. Right? So first you are going to tell me the three highlights of your training experience. Tell me. I learned about the software of Teleprime, and I also gained practical knowledge like GST registration and return filing, and I improved my communication skills during this. Okay. And any shortcomings which you observe where changes could have been made in your previous organization? Yes, one thing, punctuality is lack of punctuality is there. Like nobody comes at time at time. Okay, good. So by looking at your resume and things, I am getting a perception that you are not a risk taker in life. Right? I am getting this perception. Now you have to clear this perception of mine. How will you do that? Okay, leave it. Coming to your forte, you have written, you have got an AIR, right? Yes. You've got exemption in two subjects. What are those subjects? Cost audit and strategic management and business valuation. So what we do in strategic management and business valuation? In strategic management, we plan about we set goals of the organizations and planning for achieving it, and implementation, how to implement them and how to control over them activities, and business valuation. I learned how business valuation can done, like valuation of goodwill, intangible assets, and HRA valuation. Like Okay. Fine. Fine, Ayush. So this is it from me. So, Okay, Ayush, tell something about Section 194C of Income Tax Act. 194C is for 194 is the TDS section. It tell about contract service. If payee is individual or HUF, then 2% TDS will be 1% TDS will be deducted, and or for other person 2% TDS will be deducted. For what type of services in contract? Advertisement service. Okay, Ayush, what is deferred revenue expenditure? It is a revenue which is received now, but
it's in, but obligation is due. मतलब Revenue received now. revenue is now, Deferred revenue expenditure. revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. Okay, Ayush, last question from my side. Tell me about Badalia, faith and patience. You have written it in your resume. Yes. Yeah. Badali, I work after exam in that company. It is a body care and health body care. It produce body care products like shampoo, conditioners, and it's totally sell with only online mode. So what work you performed over there? As a accountant over software Telegram. Fine. Okay. So last question, why we should hire you or how you have the edge from the other candidates? I have good knowledge over Microsoft Office and basic knowledge of Pico and also practical knowledge at Teleprime. And I am adaptive to learn new things and I have positive attitude towards but assigned. Okay. Okay, thank you, Ayush. Thank you very much. Set. आयुष कॉन्फिडेंस लैक लग रहा है आपको, जो भी आप बोल रहे हैं डन पर्सनालिटी एक शो कर रही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इम्प्रूव. और जब भी आप बोले तो आपको सामने इंटरव्यूअर की तरफ देखना. सो आप जब भी बोल रहे हैं तब नीचे देख रहे हैं और फिर बोल रहे हैं. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने के बाद आपको सोचने के लिए 15-20 सेकंड ज्यादा टाइम चाहिए तो यू नीड टू आस्क टू द इंटरव्यूअर कैन आई हैव 20 सेकंड 30 सेकंड फॉर द परमिशन. और जब आप एंटर होते हैं तो आपको जैसे फर्स्ट टाइम वो परमिशन आपको लेनी है बैठने से पहले, ग्रीटिंग्स करनी है आपको. ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी वॉटएवर, इस पर ध्यान देना है. अपार्ट फ्रॉम दैट 194C जो मैंने पूछा वो आपका पार्शियली करेक्ट था. ठीक है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक, आप और भी चीजें नहीं बता पाए जो होती है. ठीक है, बाकी आपने शॉर्ट कमिंग का भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया, थोड़ा पंक्चुअलिटी, लेकिन आपके हर एक आंसर बहुत शॉर्ट थे. वे भी एक आपकी शॉर्ट कमिंग हो गई. आप थोड़ा उसको एलोबरेट करके थोड़ा सा बोल सकते थे. सो दैट वाज द थिंग. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पूछा, आप रेवेन्यू बता रहे हैं तो एक्सपेंस है अपने आप में, तो आप रेवेन्यू कैसे बता रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये एक गलती थी. बाकी मैम ने आपको जो भी पूछा वो मैम बताएगी उसके लिए. So first thing first, आयुष जब आप एंटर किए तो आपने परमिशन मिली, वो दूसरा ने मेंशन कर दिया. But when you are walking, why you are walking like a, what you can say, ऐसे डीले बन के क्यों वॉक कर रहे हैं हम? If you can't control your hands, then put both of your hands in resume. ठीक है, रेज्यूमे आप एक हाथ से रेज्यूमे से हिलाते हुए लेके आ रहे थे. ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ो सो दैट आपका हाथ स्टिल रहे वॉक करते वक्त. ठीक है, स्ट्रेट वॉक करो, स्टिफ वॉक करो थोड़ी. ठीक, फिर बोलते वक्त ऑल्दो जितना मैंने आपको अभी तक एनालाइज किया है आप उससे थोड़ा सा बेटर थे. एटलीस्ट यू स्पोक, है ना. कॉन्फिडेंस की अभी भी कमी है आपके अंदर. आपको थोड़ा सा ना अच्छे से ऐसे सामने वाले को बताना है दैट यू नो इट, राइट. जैसे आपका इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था. सो गेट द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन सही नहीं बोल रहे होंगे तो इंटरव्यूअर विल से कि नो आई हैव आस्क्ड दिस थिंग, राइट. तो आपको कुछ भी आता, मैंने आपसे पूछा था फॉर्म्स क्या होते हैं, आईटीआर के फॉर्म्स. तो आपको मुझे तो कंफ्यूजन लग रहा था कि आईटीआर वन वाले या उसमें वो भी फॉर्म होते हैं शायद 23. तो कोई भी 2-4 बता देते. आपने जो वर्क किया वो बता देते, मुझे तो ये पता है. तो पूछे तो फॉर्म में आप हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन में यू गेव सच एन आंसर कि हम मैचिंग करते हैं. नाउ मुझे पूछना पड़ा कि क्या बेनिफिट क्या है उसका. सो यू हैव स्टडीड ऑडिट, राइट. तो ऑडिट में भी बोल सकते हैं कि ऑडिटर के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि असेट्स को चेक करना है, राइट. अगर असेट्स को चेक करना है तो कैश ऐसी असेट है जिसमें मिसहैपनिंग्स बहुत सारी हो सकती है, राइट. सो जो भी आपको नॉलेज है ना उस बारे में सारी नॉलेज ऐसे खोल के रख दो. ऐसे लगना चाहिए कि
ऑल इंडिया रैंक करेंगे, राइट। फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया, बट क्रिकेट के रूल्स पता है? क्रिकेट के 4 रूल्स बताओ। 11 प्लेयर्स, हाँ, ऐसे इजी रूल्स बताओगे तुम। 30 यार्ड सर्कल हाँ, फॉर फील्डिंग, मतलब 5 फील्डर इन दिस कंपल्सरी, पावर प्ले, हम ऊपर क्यों देख रहे हैं बार बार? वहाँ आंसर लिखा हुआ है नहीं ना, तो ऐसे नजरों में देखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपने अंदर इस बात का लेके आइए कि यू नो इट। आंख में देखो, सामने वाले आपको ऐसे थ्रेटन नहीं करने वाले हैं, दे आर हियर टू लिसन योर आंसर्स, कुछ सुनेंगे वो, ठीक है। ऊपर वगैरह नहीं देखना है हमको। जब आप बैठे हो तो सिट विद अ स्ट्रेट पोस्चर, ठीक है। आगे ऐसे झुक के नहीं बैठना है, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता है, जा सकता है, बट पहले से सही है। हाँ, आंसर भी आपको आ रहे हैं कंपेयर टू अदर्स। हाँ, अदर्स से तो अच्छे आंसर दे रहे हैं, बस उनको कॉन्फिडेंस के साथ दें। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हाँ, वो थोड़ी वीक है अभी भी। हाँ, उस पे वर्क करना है आपको। आपकी स्पीड क्या, कुछ की तो स्पीड फास्ट होती है, आपकी स्लो है, ये उल्टा है आपका। फिर आपने डायरेक्टली पॉइंट लिखा है एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ठीक है। आपने ये पॉइंट स्ट्रेट अवे लिखा है अपने रेज्यूमे में, एंड यू डोंट नो द बेसिक डिफरेंस, है ना। अमाउंट का क्या डिफरेंस अमाउंट का है, नहीं लगता आरटीजीएस में, ठीक। फिर आपका ईवे बिल का सर ने जो आपसे साइन, आरटीजीएस में अमाउंट होता है मिनिमम शायद 2 लाख 2 लाख, 2 लाख से नीचे नहीं होता। हाँ। बाकी एनईएफटी और आईएमपीएस, आपका आईएमपीएस इंस्टेंट होता है, एनईएफटी थोड़ी टाइम बाद में होता है, बट दोनों में कम अमाउंट चल जाता है, राइट। तो ये है ईवे बिल की साइट वगैरह। अगर देखो जो चीज, हाँ, जो चीज लिखी है ना, उस पे थोड़ा गूगल कर लो, ठीक है। हर चीज पे गूगल कर लो, गूगल करोगे विकिपीडिया खुल जाएगा, सब पता चल जाएगा उसका आगे पिछला जो भी है, ठीक है। ये काम तो करना पड़ेगा ना, जो भी लिखा है कुछ यहाँ पे, राइट। सो ये सारा कुछ आप पढ़ के जाओ। जो 2 सब्जेक्ट्स में आपने एग्जामिनेशन लिखी है, उनके बारे में पता होना चाहिए। ऑल्दो यू हैव आंसर्ड इट नाइसली, बट इट कुड हैव बीन वे बेटर, है ना। कुछ और जैसे आवाज की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, सो जॉट डाउन सम पॉइंट्स कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की खासियत क्या है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट के जितने भी बेसिक प्रोविजंस है, यू शुड बी थॉरो विद दैट, ठीक है, कि कितने पे एप्लीकेबल होता है, और जो भी छोटे छोटे बेसिक प्रोविजन है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा रट रहे हो, वो हो भी नहीं सकता, हल्का हल्का पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हम बेसिक में कोई पूछ ले तो हम उसमें तो मार्क नहीं खाए। यू आर रिटन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मीन समथिंग, राइट। और जब यहाँ मेंशन किया है और ऊपर एआईआर लिखा है, तो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू आयुष। ठीक है। ये प्रिंट ऐसा मत ले जाना। ये प्रिंट कहाँ से कराया है इसको? ये लेके जाने वाले हो? ये थोड़ा सा ना ऐसे, मतलब बहुत ही लोअर प्रिंट क्वालिटी, और ये कलर है तो कलर करवाओ ना। कलर ही कराना है, तो फिर ये लगाया है क्यों? और क्वालिटी भी बहुत वो है, कलर प्रिंट करा लो, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। आयुष वॉक देख रही हूँ मैं, सही से वॉक करना।